Check. Hello, mic testing. हाँ आ रहा है. So at the end of 49 balls, the score is 60 for 2. Phoenix have just lost an important wicket. The man in form just got caught out at cover by KP of the bowling of Kranti Verma. So at the end of 49 balls, the score is 60 for 2. Windy conditions here today. Kranti Verma to continue proceedings, bowling to Hanish. Pinches a single through cover. Hanish has always been a player who's been very good through the covers. Takes his time. Has batted well in the 2 games today. This is his 3rd innings of the day. So end of 50 balls now. (61 for 2) at the end of 50 balls. Supratik Nath is batting on 1 of 3 balls. Hanish Kanchandani is batting at 1 of 1. So, to run you through the scorecard, Keshav has scored 29-27 balls. Hit 3 boundaries and a 6. Was dismissed for the bowling of Kranti Verma, caught out by Kaushik Pramanik in the covers. Jeet Bhomik scored 29 of 19 balls, caught Dilip bowling of Kranti Verma. Rajiv bowling now. Off the pads, trickles down to Dilip, who is fielding at gully. An interesting format, the 100-ball format, launched by Accolade Management Services. Hanish crunches that one down to the covers for 4. Has to be said, poor fielding down in the covers. The 2 fielders there, you expect them to cut that off. That's a very, very good shot by Hanish. He's very strong in the covers, as I told you before. Already scored 5 runs to that region. United Sporting so far have used 5 bowlers. Dilip has bowled 5 balls and conceded 2 runs. Rajiv Mukherjee is into his 17th ball. He's conceded 17 runs already. Ikhlaq Ahmed has bowled 10 balls and conceded 23. Has been a bit expensive. Gautam has bowled 5 balls and conceded 4 runs. And Kranti Verma has been the pick of the bowlers, bowling 15 balls, giving away 15 runs and picking up 2 wickets. United Sporting are in a rich vein of form over the past 4 weeks. Has to be said that all the games that they've won have been really, really close calls. Most of them have been close calls. They got out of jail last Sunday as well against Steelbacks in the 2020 format. Well, let's see what they have in store today. A much changed lineup today from United Sporting. We have a great game in store here. It's always a close run game whenever it's Phoenix versus United Sporting. Very rarely does a match go one-sided when these 2 teams collide. One has to say that Phoenix has been riding their luck for a long time, given the form of Keshav Tiwari.
Very rarely over the past 4 weeks have we seen Keshav bat and not score runs. To say that 29 runs in a 100 ball format is a bad score would not be right, and by his high standards he would be the first to admit that he should have converted this 29 into a bigger score. Looks like it's a Clark Ahmed who's coming back into the attack to finish the 5 balls from the zoo end. It's a lot warmer here today. At the same time, it's a little windy too. So Clark Ahmed to bowl the last 5 overs from the zoo end. The last 5 balls, I stand corrected. A rare dot ball bowled by Clark, and the reason I say rare is because he's only bowled 1 dot ball up until now in the 10 balls he had bowled previously. This is his second game for United Sporting. After a long wait, he's had a chance to represent the team. Had a very mixed debut against Steelbacks on Sunday. Bowled a very good first spell and then came back for his second and got hit for about 22 runs in that third over he bowled, but he came back brilliantly in the last over to concede only 7 runs and pick up 3 very, very big wickets and turn the tide and turn the match in favour of United Sporting. Clark Ahmed once again, and that's another dot ball. When things don't go your way, they don't go your way, and when they do go your way, you tend to make the most of it. As you can see, Clark has now bowled 2 consecutive dot balls. That's the beauty of this format. You cannot not allow too many dot balls because it's just 100 balls. One argument is that you play this game similar to a 16 over game or a 17 over game, but the calculation dynamics change completely. Has to be said that all the teams that have played this format so far are yet to usurp the format and formulate plans and make sense of tactics that need to be deployed for this format. This format is also pretty nascent and has had just 1 edition in England. This year is going to be their 2nd year of the format. So teams are still coming to terms with the format of this tournament. That should be taken. That should be taken. It is taken. It's Dilip Singh again. Safe pair of hands. That's the end of Hanish. Phoenix had lost the 3rd wicket. Clark has bowled a fantastic 5 balls here. He's picked up a wicket. And now Phoenix find themselves reeling at 68 for 2. Just to run you through the playing 11 for both the teams. Sohan Roy, captain and wicketkeeper for today's game. Stand-in captain for Arpit Parak, who is not playing today. Dheeraj Patodia, left-handed batsman, has been a part of United Sporting for a pretty long time. Dilip Singh, the strike bowler, the go-to man. Gautam Das, the second of the platinum players in the team. Joy Mukherjee, a handy all-rounder. Kaushik Pramanik, who opens the batting with Sohan, bats more than he bowls these days. Kranti Verma, one of the most dependable all-rounders, left-arm spinner and a lower order batsman for many years now for United Sporting. Vasudev Rao, the tennis expert, the 6th man. Rajiv Mukherjee, the stalwart from Railways, 49 years of age, oldest member in the team.
Ikhlaq Ahmed, ex-IPL, ex-ICL, played for KKR as well, played for Bengal in the Ranji Trophy at 40 years of age, also in the playing 11. And Shumanto Bhattacharjee, the off spinner, also makes to the playing 11 today. Phoenix, Keshav Tiwari, the man in form, the captain. Akash Balmiki, the left-arm spinner, also in the team. Debayan Sarkar, that's Tony, a very dependable and consistent left-arm spinner. Devjit Bhattacharjee, popularly known as Nantu, also in the playing 11. Hanish Khanjandani, who just got out a while back, also makes it in the playing 11. Nishit Bhomik, the wicket-keeper of the team, who opened the batting, made a very good start, scoring 29, also in the playing 11. Dr. Rohit Panda, along with Santu Das, Saptarshi Goswami, who had a close shave outside a while back when a ball came and hit the bottle of thumbs up he was carrying. For a while it looked it's going to hit him on his body. Siddhartha Das, Shrupatik Nath, and they left us spinner Rashid. Very well bowled once again. Very well bowled once again. Good fielding there at third man by Rajiv. At 49 years of age, he still shows fitness levels way below his age. Well done there at third man. Dilip Singh continuing to do what he does best, tightening the noose around Phoenix. Oh, that was going down leg. Hence no appeal. 71 for 3 and 64 balls so far. One more to go before Dilip. In fact, that's the end of 65 balls. And now there is a bowling change. Dilip Singh still has 10 balls to bowl. No show of emotion whatsoever by Dilip. He's complaining that one of the balls he tried to stop hit him in his hand, in some discomfort, but then Dilip has seen it all and felt it all before. Back in the attack is Kranti Verma. Very well bowled once again, but this one's going to go down to the gully fielder in the boundary. A quick pickup, but a very slow release along the floor to Sohan Roy's gloves. A single to add to the score. Kranti Verma once again goes for a big heave over mid-wicket, but played all over it and did not manage to connect that one. Another dot ball. Kranti Verma once again belts it through the covers. Gautam Das picks it up first time, releases the ball right into Kranti Verma's big palms. The score quickly moves on to 73 for 3. The fielding has been pretty good so far. Phoenix made a very good start. They made a sedate start. It was a strong start, one that they would have hoped they could have built on. Still a lot of time left for them to resurrect this innings. Another 30 balls to go after the end of this one. And the score moves on to 74 for 3 at the end of 70 deliveries. 30 more deliveries to go. They would be looking at somewhere in the region of 120 to 125 runs to make a fight out of this, because this seems to be a very, very good pitch to bat on. $75 for 3 at the end of 70 deliveries.
Coming back into the attack is Gautam Das, who has bowled 5 deliveries, bowled 4 dot balls and conceded 4 runs. So he has another 15 deliveries to go. Dilip has another 10, and one has to think that Ikhlaq is going to bowl the remaining 5. Phoenix, has to be said, are one of the most spirited teams in this circuit, in the amateur circuit. They've always played the game in the right spirit. All the lads in the team are pretty much the same age, and all very jovial guys, with their team owner Amrish and the likes of Keshav and Nantu have given a very good platform to all the members in the team to play together. A very, very bad misfield by Joy. That's so unlike Jai Mukherjee. Concedes a boundary. That's club side fielding, or maybe even club sides field better than that. An aberration, has to be said. I don't know what he's waving at, but I'm sure that's his way of saying sorry. A welcome boundary for Phoenix. And that's a very good shot, but then it's going to fall into the arms of Kaushik Pramanik in covers again. He's having a great day in the field. Another catch for Kaushik Pramanik. A much deserved wicket for Gautam Das. Surpratik Nath has now been dismissed for 5 runs off 11 balls. The next batsman coming in is Saptarshi Goswami, one of the most underrated bowlers in the circuit. A wicket-taking bowler, has a very nagging line and length. This is his second year, or rather his third year with Phoenix. He joins Rohit Panda out in the middle. (79 for 4) at the end of 73 deliveries. Rajiv Mukherjee waving his arms towards me, wearing the number 7 jersey. Haven't heard much of Sohan Roy today on the field. Joy Mukherjee has been asked to take this position inside the circle, the point region. Kranti Verma is out on the boundary line in the gully region. Plays it straight down the ground, down to long on. Dilip Singh picks it up first time. Back to Gautam. One more delivery to go. Correction. Gautam is going to bowl 10 on the trot. Just finished his 5 and he's going to bowl the next 5 as well. Is it? No. 2 more deliveries to go before there's a decision time. Well stopped there. Very well stopped by Vasu. A very uncharacteristic field position for Vasu, who normally fields in long on. But Handa made very good connection there. Panda is actually a very good batsman than most think, and if he can stay till the end, the score can definitely go past 120. Showing enterprise, dancing down the wicket and absolutely hammering that one down to long off. Phoenix would hope that one of these shots are going to connect well and possibly go out of the park. They could do with a few of those. So yes, Gautam is continuing from the same end, and he's going to finish 10 balls from the same end. Bowling to the left-hander Gosu, round the wicket. A bit of hesitancy, and a direct hit would have got him. A direct hit, and that would have been curtains for Saptarshi. A great attempt by Joy.
The likes of Joy and the likes of Gotham, you would expect 7 times out of 10 they would hit the timber with those throws. But Satoshi fights to live another day. That's a good shot. That's going to go over the cover region. Dilip Singh's going to cut it off. You had to feel for the batsman playing in St. Thomas this season. Even though the pitch happens to be very good for batting, the outfield in the cover region at the zoo end hasn't been as quick and lightning as it has been in the previous season. So on another day that would have easily gone over the boundary line for a boundary. Instead it's just a single. Pulls that one down to mid wicket. Shumanto quickly cuts it off. Another single. So it's been 79 deliveries and Phoenix have scored 84 and they lost 4 wickets. Another delivery to go before we change ends and come back to the school end. Oh, that must have stung Gautam's fingers. Another single to end the over. There's a medical timeout. So at the end of 80 deliveries, the score is 85 for 4. And the beautiful part here is that Rohit Panda, who's a doctor himself, has just quickly gone on to Gautam to check what has happened to him. And I'm sure he's going to be the one treating him. Not to forget, he was the one who played that shot. So, well done, Rohit Panda. Sorry, Rohit Panda is another friend of mine, but he's not the one playing. This is Rohit Panda. So, well done, doctor. Very, very well bowled by Gautam. He's bowled 15 deliveries, 7 dot balls, conceded 14 runs, and taken an important wicket as well. But then one has to say that the most important wicket was taken by Kranti Verma when he picked up Keshav Tiwari out in the covers. Keshav has been in sensational batting form right throughout this season. That's the thing about the wickets during the months of November, December, January and February. It's when they start to crumble is when some of the best batsmen in the circuit are tested, and one would expect the likes of Keshav and the likes of Gautam Das and the likes of Puneet Rawat to still carry on in the same vein of form, because they know when to change gears. Once they get their eye in, they take the pitch out of the equation. That said, Puneet Rawat too has been in sensational form this season so far. Has to be one of his best starts from what I can remember since I came into the circuit in 2011. The man never seems to age. Still looks the same. He still looks the huge frame that he was when I saw him in 2011. Not much has changed about his game either. You want to be anywhere bowling to Puneet Rawat, but you don't want to be bowling at him and standing right in front. He might just clean you out. Anywhere else is alright. Had the honor and privilege to bowl 3 deliveries to him 2 weeks ago in ESI. Lucky me, he didn't smack me for anything. Keshav did. That's the form Keshav has been in. Unlucky to have not got to his century. Was 99 not out. Back to the present once again. It's going to be Shumanto, who I guess has been brought on to bowl because there's a left-hander on the other side. 85 for 4 away 3 balls. Shumanto Bhattacharjee going in to bowl his first delivery, and that's a single. I think the throw at the striker's end would have
been more beneficial, as Sohan quickly pointed that out to the fielder. Dilip Singh has 10 more balls to go. Dilip Singh might just turn out to be the difference between what could be a score of 130 or maybe 110. And now we can see why Shumanto was spot on. While the left-hander is going to wildly swing at everything, trying to heave shots over the cow corner, he's going to tease the batsman out outside the off stump. Like that, and this time it's gone for 6. So second time lucky for Saptarshi Goswami. Picks that one out, smashes it for 6. Sohan clearly isn't happy. Sohan's never happy. He never likes his bowlers getting hit for 6s, regardless of how good that or bad the delivery is. A very, very good shot by Saptarshi. Can he bring them back into the game? Very well bowled and equally well played. Do not rule out Phoenix. Do not rule them out. They aren't going to give this up. They'll just keep chugging along, look for their moments to score. And that's a wide delivery. The first that I have seen today or commentated on. Very well bowled by Shumanto. Good thinking to bowl outside the off stump, but then again, that was far too wide. A much better delivery. This time another dot ball. So how deep do you want to take this? It's 93 for 4 at the end of 85 deliveries. Another 5 balls to go. And Shumantos will continue the next 5 deliveries as well. At this rate, Phoenix should get to 111, although they would definitely want a gap of at least 25 to 30 runs from the number of balls that are allotted in this format. So a score of anywhere between 120 to 130 might still be a fighting score. Oh, missed out. The ball didn't rise as much as Dr. Panda would have hoped. And this one should go for 6. It is a 6. Unlucky. It's a small end down there. If you connect and if luck is on your side, you're most likely to get a 6 than get out in that end. There were 2 fielders there and none of them were in business. So that's a much needed 6 for Phoenix. Shumanto again. And this time it should go to just over Kaushik. Just over Kaushik. And Dilip quickly rounds it off. Batsman quickly pick up 2. Rohit would like to play as much as possible while Shumanto is bowling. He's got to bowl his last delivery. Hasn't been cheap. That will round off his 10 balls for this match, and he has conceded a total of 18 runs. Under the circumstances, that's a good 10 balls, because mind you, they do have wickets in hand and we are at the death end of the innings. Dilip Singh is now going to round off the 100 balls by bowling the last 10, I think, unless something really drastic happens.
for all those who've joined in. I hope you guys are all safe back at home and in the confines of your office where you're watching this game live on YouTube. I wish you all and your family are safe, and while we are still riding through difficult times, I'm sure there will be light on the other side and see the back of the coronavirus, and we can say bye bye to the masks very soon. But till then, let's fight on and stay safe. Enjoy the game, enjoy live cricket. Enjoy live cricket when India is not playing. The most interesting cricket being played these days is the one that's been played in our circuit. There's so much more to look forward to watch your friends and ex-teammates and teammates play live on YouTube. Has to be one hell of an experience. Also like the idea of players going back, like myself. We go back and we look at the highlights of the match and see what we did. Watching opposition bowlers and batsmen perform and trying to figure out what their strengths and weaknesses are. Cricket in the amateur circuit has come a long way. And that is an outside edge, a fortunate boundary. Dr. Panda is turning on the style now. A much needed boundary. The score quickly moves on to 107 at the end of 92 deliveries. Another 8 balls to go. And if these two stay out there, we could easily be looking at 125 to 130 runs. Oh, an inside edge, and so nearly he tracked that back onto his stumps. Dr. Panda taking no prisoners. No time for respect. It's time for runs now. And he has nailed that over the covers, and that's an amazing shot to the cover region, the same region I was referring to, which is slowed down so much considerably compared to previous seasons. That was sailed away through the cover region for a boundary. The score has moved on to 111 of 94 deliveries. 6 more balls to go. In traditional cricket, last over of the game, and this one could be a boundary as well, or will it? No, it's been quickly, but oh, that's a boundary. Bad fielding there, really bad fielding by Shumanto. How Sohan would have hoped that it was Dilip Singh there on the boundary. He would have easily cut that out, but then he's bowling and Shumanto has taken his place at long off. 115 for 4 at the end of 95 deliveries. The last 5 balls coming up. And it's still going to be Dilip Singh, regardless of the 3 boundaries that he's conceded, 2 of which were rather fortuitous for Dr. Panda. One of the outside edge, one of a misfield, but one was actually a very good shot. Rohit Panda proving his true worth to Phoenix yet again. Another beautiful shot, but then Dilip and Sohan are in no mood to make the same mistake again. They have installed a fielder on the cover in the cover region to sweep the boundary. That brings Saptarshi Goswami back on strike. The left-handed Goswami facing the left-arm spinner Dilip Singh. And that should be out. And it's Kranti Verma. And that's a very good catch. Dilip Singh picks up yet another wicket this season. It's 116 for 4. It's rather 116 for 5 at the end of 97 deliveries. 3 more deliveries to go. It'll be interesting to see who's coming in.
Sontu Das is the new man in, who's going to be at the non-striker's end. And I'd be surprised if Rohit Manda does not play all the 3 deliveries left. From a Phoenix perspective, they would want Rohit to play all the 3 balls and possibly get on the end of a few more runs. Mind you, 116 for 5. Not enough in the context of this game, one has to say. So definitely Rohit would be looking to add a few more runs to the score. Gets in and tries to find a cheeky boundary down at fine leg, but then goes straight into the hands of Kranti Verma. Brings the new man on strike, who, it has to be said, has to look at the last 2 deliveries of this innings as a free hit. And he has got that one right in the middle of the bat. That's a 6. A free hit it was for Sontu at the end. Not having to worry about his wicket. The score quickly moves on to 123. And as predicted, they are pushing 125. I didn't understand. And that's about it. End of the 100 balls. A strong end by United. A great comeback by them after a very, very good opening partnership between Jeet Bhawmik and Keshav Tiwari. One would have to say that Phoenix would have wanted to score a lot more than they did at the end. So 100 balls, and when you go out to run a ball, that's 100 runs, and you have to score 24 runs more than that. So the equation is quite simple for United Sporting, who, mind you, chased 187 of 100 balls versus 711 at ESI. We'll be back for the second innings very soon. We can see the United Sporting team in a huddle, formulating their plans and looking to chase down their allotted runs in the 100 balls. So we'll see you in the second innings. It's time for a commercial break, and once we come back, we'll have the chase for you on the other side. Thank you.
for this 100-ball match between Phoenix and United Sporting. The chase begins. Jeet Bhomik is walking out in his keeping gear, who's will keep wickets for Phoenix. Phoenix look in good spirits. They should. It's a game of cricket. You're here to enjoy. And enjoy they are, and they will. And even more if they can pull this one out. It's going to be Sohan Roy and Kaushik Pramanik who are going to open the batting for United Sporting. Mind you, Phoenix have a very good bowling lineup. They have Debayan Sarkar, also known as Tony, who has to be one of the best left-arm spinners in the corporate circuit. Just behind Dilip Singh, one must say, and amongst the best in the amateur circuit here in Calcutta. It'll be interesting to see who opens the bowling for Phoenix. They clearly have options out there. They have Keshav Tiwari, who has been seen bowling with the new ball in many a games. They have Hanish as well, and then they've got Tony, and they got Balmiki, who's also a left-arm spinner. This is going to be a very, very interesting game. All is not done till the runs are scored. All is not done till all the wickets fall. So the batsmen have to go out there and score the runs, and the bowlers know that they need 10 wickets to win this game. It's highly unlikely that Phoenix are going to bowl 100 balls and stop United scoring 124 runs. So 10 wickets is what they'll be looking at. सभी दर्शकों का स्वागत है इस सेकंड पारी के लिए, जहां पे यूनाइटेड स्पोर्टिंग जीतने के लिए 124 रनों का लक्ष्य बनाने के लिए अब बल्लेबाजी करेंगे। सोहन रॉय और कौशिक प्रमाणिक क्रीज की तरफ अग्रसर होते हुए। और अगर देखा जाए तो हालात कितने मुश्किल के हैं। 100 गेंदों में फिनिक्स ने सिर्फ 123 रन का लक्ष्य 124 रन का लक्ष्य रख पाए हैं सामने यूनाइटेड स्पोर्टिंग के। और यूनाइटेड स्पोर्टिंग के बल्लेबाजों को पता है कि बहुत ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इस कश्मकश में, इस विडंबना में अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे विकेट गिर जाते हैं जब आप अपने नेचुरल गेम से थोड़ा डिविएट करते हैं। तो केशव तिवारी ने बॉल के साथ में और अरिजीत ज्योति बाहर से बोलते हुए कि सोच समझ के बॉल डालिए, क्योंकि कल आपको फिर यूनाइटेड स्पोर्टिंग के लिए बॉल डालना है जलपाईगुड़ी में। शुरुआत के बहुत करीब दूसरी पारी के सोहन रॉय गार्ड लेते हुए, पहले लेग स्टंप और अब मिडिल स्टंप। सोहन रॉय गार्ड क्यों लेते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि बॉल को करेक्ट करते वक्त वो इतने अंदर आ जाते हैं अपने स्टंप्स के कि उन गार्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता। पहली गेंद, अंपायर्स तैयार, स्कोरर तैयार, दर्शक तैयार, केशव तैयार, सोहन तैयार, और ये पहली गेंद और ये डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी शुरुआत केशव द्वारा।
फिनिक्स की टीम में काफ़ी फेरबदल दिखता हुआ। काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं उनके स्क्वाड में जो आज प्लेइंग 11 में नहीं है। शौविक दत्ता, एलेक सरकार जैसे प्लेयर्स आज नहीं खेल रहे हैं। और ये पहला रन, केशव एक वाइड बॉल डालते हुए अंपायर ने वाइड का इशारा किया। सोहन रॉय स्टेप आउट करके मारने के लिए, गेंद को मारने के लिए बाहर निकले, पर गेंद काफ़ी वाइड थी तो उसे जाने दिया और अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। और ये पहला शॉट और ये 6 रन, बहुत ही अच्छा शॉट सोहन का, नटराज पुल शॉट जिनके लिए वो बहुत मशहूर है। और ये एक और अंपायर ने किया 6 का इजाफा। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी स्टार्ट। 2 बॉल की समाप्ति पे रन जाके खड़ा हुआ 7 पे। और ये स्टीयर करते हुए बॉल सीधे हनीश के हाथों में। बहुत ही अच्छा प्रयास सोहन का, बहुत ही अच्छी बॉलिंग केशव की। और कहना पड़ेगा कि सोहन और कौशिक प्रामाणिक का ये शुरू की साझेदारी इस मैच को कहीं ना कहीं अन्याय देगा। अगर इनका स्टार्ट अच्छा हुआ, इनकी शुरुआत अच्छी हुई, तो ये गेम काफ़ी इजी हो, काफ़ी आसान हो जाएगा यूनाइटेड स्पोर्टिंग के लिए। और ये लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा यूनाइटेड स्पोर्टिंग को। इसी के साथ केशव के द्वारा एक और वाइड बॉल, कीपर के दस्तानों में, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। फिर से एक और गेंद लाते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जिसे हम बोलते हैं अनप्लेएबल डिलीवरी बाय केशव तिवारी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 8 रन बन चुके हैं 4 गेंदों में। देखने लायक होगा कि केशव इसके बाद में और 5 बॉल डालेंगे कि नहीं। और ये एक और डॉट बॉल। 5 गेंद की समाप्ति पे स्कोर जाके खड़ा होता है 8 रनों पे। अगले 5 बॉल भी अब केशव डालेंगे। कप्तान जिम्मेवारी अपने सर पे लेके अपने दूसरे 5 बॉल का आरंभ किया। और एक और अच्छी गेंद। सोहन को देख के ऐसा लग रहा है कि वह बहुत हड़बड़ी में है, बट सोहन की बल्लेबाजी कुछ इसी तरह ही हर मैच में देखी जाती है। सोहन अभी भी एक ही शॉट मारने के प्रयास में, बॉल फिर से उन्हें चकमा देते हुए कीपर के दस्तानों में। 7 गेंदों में 8 रन। केशव बहुत अच्छी गेंदबाजी की प्रदर्शन करते हुए, अच्छी गेंद, अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑफ पे वाल्मीकि बॉल को फील्ड करते हुए। एक और रन। इसी के साथ दूसरे छोर पे नए बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज कौशिक प्रामाणिक स्ट्राइक लेते हुए अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे, जो कि इस साल बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे लय में दिखे हैं पूरे सीज़न। पहले बॉल को छोड़ते हुए
बहुत सूझबूझ वाली क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों कौशिक प्रामाणिक। आज से 3 साल पहले कौशिक प्रामाणिक को हरदम हम क्रीज में डांस करते देखते थे, जिस तरीके की बैटिंग वो करते थे और डेथ ओवर्स में आते थे बैट करने के लिए। ना सिर्फ यूनाइटेड स्पोर्टिंग को बट थ्रिलिंग की टीम को भी बहुत सारे मैचों में उन्होंने अपने बैट और बॉल से जिताया है। कहना पड़ेगा कि हमारे सर्किट के बहुत डिपेंडेबल और बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं कौशिक प्रामाणिक। इसी के साथ 10 गेंदों की समाप्ति स्कूल एंड से और स्कोर जाके ठहरा 9 रनों पे। अब जू एंड से आ रहे हैं टोनी देवायन सरकार, जो कि बर्जर पेंट्स के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये देवायन सरकार नहीं है। नई गेंदबाजी जू एंड से आ रहे हैं नए बॉलर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। माफ़ कीजिएगा, अभी तक स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं आपको नए बॉलर का नाम नहीं बता पा रहा हूं। और ये पहला विकेट लेते हुए सिद्धार्था दास, पहली विकेट सोहन रॉय पवेलियन की तरफ लौटते हुए 12 बॉल के बाद में स्कोर जाके ठहरा 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब सोहन की जगह बल्लेबाजी करने जा रहे हैं धीरज पाटोदिया। सिद्धार्था 2 बॉलों में 1 विकेट बिना किसी रन के और यूनाइटेड स्पोर्टिंग अपनी पहली विकेट गंवा चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन केशव द्वारा और सिद्धार्था दास द्वारा। केशव ने अपने पहले 10 गेंदों में 8 रन खर्च के 8 डॉट बॉल भी दिए, सिर्फ 2 वाइड। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल सिद्धार्थ दास द्वारा। धीरज के लिए एक मिड विकेट बाहर लेके रखे हैं और गली फील्डर को बाहर बाउंड्री लाइन पे रखा गया है पावर प्ले गेंदों के लिए। और ये आउटसाइड एज छोड़ते तो शायद वाइड होता और ये 4 रन। देवायन की कोशिश नाकामयाब, बहुत ही अच्छा प्रयास और यूनाइटेड स्पोर्टिंग के खेमे में गए 4 रन। हालांकि देखा जाए तो सिद्धार्थ बहुत सहज-बूझ से बॉलिंग कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल रखने की प्रयास, जैसे कि धीरज को कह रहे हो कि अब आप मेरे को मार के दिखाओ। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छा मिक्सअप करके बॉल कर रहे हैं सिद्धार्था दास। 15 बॉल के समाप्ति पे स्कोर जाके ठहरा 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक नए बॉलर का
का इस्तेमाल फिनिक्स करते हुए दूसरे एंड से। एक शुभ प्रतीक जो कि ऑफ स्पिनर हैं फिनिक्स के टीम में, वो बॉल करते हुए, और धीरज अपना समय लेते हुए, उन्हें पता है कि लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। बहुत ही अच्छी शॉट, एक सिंगल मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। कहना पड़ेगा कि फिनिक्स अपनी गेंदबाजी बहुत सूझबूझ से कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है अपने लक्ष्य के रक्षा में, और प्रयास था कि बॉल को इनर सर्कल के थ्रू एक 4 मारा जाए, मगर बॉल सीधा फील्डर के हाथों में। अगली गेंद स्लॉग स्वीप की कोशिश, एक और डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे फिनिक्स की। 18 गेंदों में स्कोर जाके खड़ा होता है 15 रन 1 विकेट के नुकसान में। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन आउट का एक चांस मगर नहीं। बहुत अच्छा कॉल धीरज के द्वारा। 19 गेंदों में 15 रन, माफ कीजिएगा 20 गेंदों के समाप्ति पे 15 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत फिनिक्स द्वारा। करंट रन रेट 3.75 यूनाइटेड स्पोर्टिंग का, और रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन प्रति ओवर का है। केशव तिवारी अपने अगले 5 बॉल की शुरुआत करते हुए स्कूल एंड से। पहले 10 बॉल उनके बहुत अच्छे रहे, 9 रन खर्च के 8 डॉट बॉल किए उन्होंने। लगता नहीं है कि इस बार वो 5 बॉल से ज़्यादा करेंगे। वो अपनी 5 बॉल रखने चाहेंगे डेथ ओवर्स के लिए। अगर ये गेम वहाँ तक जाए तो वो तो चाहेंगे कि गेम वहाँ तक ना जाए और इस मैच में फिनिक्स जीत हासिल करे। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा कवर फील्डर के हाथों में। एक सिंगल लेते हुए ऑन साइड पे टैप करके एक सिंगल लिया धीरज ने। स्ट्राइक में फेरबदल, कौशिक प्रमाणिक अब स्ट्राइक लेंगे। वाइड बॉल का इशारा, और कीपर के दस्तानों में बॉल घुस के फिर नीचे भी गिर गई। और अंपायर अपने डिसीजन को चेंज करते हुए, बॉल पैड से लग के गई थी। कौशिक इस फैसले से नाखुश। लेग अंपायर का इशारा कि बॉल कौशिक के पैड से लग के गई थी। कौशिक का कहना है कि बॉल उनके पैडों में लगी ही नहीं। वो कह रहे हैं कि उनकी
बैट पैड पे लगी थी। क्रिकेट में अक्सर ये होता रहता है। केशव अगली गेंद लेके आते हुए, और एक अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ रीजन पे वाल्मीकि ने बॉल को फील्ड किया और सीधा केशव के हाथों में एक और सिंगल का इजाफा। चौबीस गेंदों में स्कोर जाके खड़ा हुआ 17, एक विकेट के नुकसान पर। केशव अगली गेंद लेके आते हुए धीरज को, और धीरज की एक बहुत ही अच्छी शॉट, कड़कड़ाता हुआ चौका कवर रीजन के थ्रू। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, और उससे भी अच्छी गेंद बल्लेबाजी का प्रदर्शन धीरज द्वारा। 4 रन। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि केशव शायद ही 10 बॉल डालेंगे इस बार, और वो 5 बॉल डाल के रुक चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि हनीश की तरफ इशारा किया जा रहा है 5 गेंद डालने की। सप्तर्षि गोस्वामी अगले 5 बॉल स्कूल एंड से लेके आते हुए गेंदबाजी का सामना करेंगे धीरज पाटोदिया। विकेट टेकिंग बॉलर हैं सप्तर्षि गोस्वामी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और आज हमने फिनिक्स के बल्लेबाजी के समय देखा कि वो अच्छे रन भी बनाए थे, जो कि उनके टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगली गेंद सप्तर्षि गोस्वामी द्वारा। और पहली बॉल वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, लेग साइड के बाहर। बहुत ही अच्छा विकेट कीपिंग का प्रदर्शन जीत भौमिक द्वारा, गेंद सीधे उनके दस्तानों में। उनके शरीर पे ना जाएं, वो जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उससे भी कई अच्छी ज़्यादा विकेट कीपिंग भी करते हैं। और एक और वाइड, और फिर से बॉल जीत के दस्तानों पे। जीत को मेहनत करा रहे हैं सप्तर्षि गोस्वामी। जीत भौमिक भारत के लिए हैंडीकैप क्रिकेट भी खेलते हैं। और बहुत ही अच्छी शॉट, और ये 4 रन। वहां पे आप देवजीत से एक्सपेक्ट नहीं, आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो 4 रन रोक पाएंगे वहां पे। बॉल की गति बहुत तेज़, और धीरज के खाते में एक और चौके का इजाफा। बहुत ही अच्छी बैटिंग, धीरज बहुत ही अच्छे टच में लग रहे हैं। हिसाब से देखा जाए तो पहली गेंद पे 6 रन बन चुके हैं, 2 वाइड और 1 चौका। अगली गेंद, और ये सिंगल बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन द्वारा। कहना पड़ेगा कि कौशिक बहुत अच्छे रनर हैं बिटवीन द विकेट्स। धीरज के लिए हम ये सेम बात नहीं कह सकते। कौशिक प्रमाणिक अगली गेंद,
और ये एक बहुत ही अच्छी शॉट और ये 4 रन। पहला चौका कौशिक प्रामाणिक के बैट द्वारा। अट्ठाईस गेंदों की समाप्ति पे स्कोर जाके खड़ा होता है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और एक और शॉट गली रीजन में, वहाँ पे एक फील्डर है बाउंड्री लाइन पे रोकने के लिए। एक और सिंगल का इजाफा। यूनाइटेड स्पोर्टिंग का स्कोर अब जाके खड़ा होता है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्कूल एंड से आखिरी गेंद जो सतोशी गोस्वामी लेके आएंगे। और एक और सिंगल। शॉट में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज़्यादा। तीस गेंदों के समाप्ति पे स्कोर जाके खड़ा होता है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यूनाइटेड स्पोर्टिंग को अब जीतने के लिए 70 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता। भाई अब हालात तो मुश्किल के हैं, अब किसके लिए मुश्किल के हैं ये कहना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि अभी भी फिनिक्स के जो अच्छे गेंदबाज हैं, जैसे कि अब जो आ रहे हैं देबायन सरकार, वो अभी तक अपनी पहली गेंद भी नहीं डाले हैं। और दूसरे एंड से यूनाइटेड स्पोर्टिंग वाले भी कह सकते हैं कि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो 70 गेंदों में 90 रन काफ़ी आसानी से बना लेंगे। दोनों टीमों की अपनी विचारधारा, दोनों टीमों की अपनी ही आत्मविश्वास। क्रिकेट का खेल, कुछ भी मुमकिन। अगली गेंद लेके आते हुए जू एंड से टोनी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलिंग टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन धीरज पाटोदिया। पहली बॉल और ये 4 रन मिलेंगे वहां पे। हाँ, 4 रन। नए गेंदबाज का स्वागत करते हुए धीरज पाटोदिया ने मिड विकेट के छोर पे एक चौका बटोरा। बहुत ही अच्छी शुरुआत धीरज द्वारा जू एंड के 10 बॉलों के लिए। छियासी रनों की आवश्यकता 69 गेंदों में 9 विकेट हाथ में। बहुत सूझबूझ वाली बल्लेबाजी धीरज द्वारा। हर बॉल को आप नहीं मार सकते, हर गेंद को नहीं मारना है। जब मिलेंगे तब बरस के मिलेंगे। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, 2 रन मिलना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन धीरज के लिए। जाहिर सी बात है कि वो अब पानी मंगवाएंगे। धीरज ज़्यादा भागते नहीं हैं। सुमन तो पानी की बोतल को तैयार रखते हुए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। एक और सिंगल। आराम से बॉल को मिड विकेट पे टैप करते हुए चलते चलते एक और सिंगल बटोरते हुए कौशिक प्रामाणिक अब फेस करेंगे टोनी को। दाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के स्पिनर राउंड द विकेट आते हुए कौशिक प्रामाणिक अब स्ट्राइक पे। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी देबायन द्वारा। 7 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में देबायन के।
और यूनाइटेड स्पोर्टिंग को पता है कि उन्हें अब अगली गेंद में कोई विशेष जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही अच्छी डिलीवरी, मगर ये बॉल कवर से ना रुकेगी। मिड ऑफ के फील्डर ने बॉल को रोका। 5 गेंदों के समाप्ति पे 8 रन बटोरते हुए देबायन ही अगले 5 बॉल डालेंगे जू एंड से, जू एंड के 10 बॉल को समाप्त करने के लिए। अगली गेंद फ्लाइट करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, मगर ये 4 रन। ये गेंद किसी के लिए नहीं रुकेगी। धीरज के द्वारा बहुत ही अच्छी शॉट। इंतजार करते हुए कवर्स के थ्रू एक तड़तड़ाता हुआ चौका। इंतजार का फल, सब्र का फल कितना मीठा होता है, वो जब बॉल बल्ले पे लगी तो समझ में आया। और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग। देबायन की दिलेरी को दाद देनी होगी कि वह अभी भी बॉल को धीमी गति से डालते हुए, फ्लाइट करते हुए बॉल कर रहे हैं धीरज को। और ये जोर की बॉल, और ये इन्होंने बाहर मारा है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शॉट धीरज द्वारा। ऐसा लग रहा है कि धीरज आज ठान लिए हैं कि वो आज मैच अपने पे लेके ख़त्म करेंगे। बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन नहीं कहेंगे अपने फीनिक्स द्वारा, बट धीरज बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए यूनाइटेड स्पोर्टिंग को जीत की तरफ अग्रसर करते हुए। अगली गेंद देबायन द्वारा, बहुत ही अच्छी बैटिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी धीरज द्वारा। सिंगल लेके दूसरे छोर पे पहुंच गए हैं और स्कूल एंड के पहली बॉल का सामना धीरज ही करेंगे। अब देखने लायक होगा कि अगली ओवर की गेंदबाजी कौन करेंगे। मुझे लगता है कि उनके टीम के जो दाएं हाथी ऑफ स्पिनर हैं उन्हें लाना चाहिए, बट हर कैप्टन के, हर टीम के क्रिकेट के अपनी नज़रिए होते हैं, अपनी विचारधारा होती है। और लग तो ऐसे ही रहा है कि इन्होंने ऑफ स्पिनर को ही गेंदबाजी का दायित्व दिया है, जो राउंड द विकेट आएंगे अपनी अगली 5 गेंदों के लिए। दर्शकों को बता दूं कि पहले 5 गेंदें इसी बॉलर ने जू एंड से डाला था सिद्धार्थ दास के साथ। स्कोरबोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। 40 गेंदों के समाप्ति पे रन जाके ठहरा 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये बहुत ही अच्छी शॉट, और ये 4 रन का इजाफा। बहुत ही अच्छी बैटिंग। कहना पड़ेगा कि धीरज के इस सीजन में ये सबसे अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन माना जाएगा ये। अगली गेंद, और बहुत ही सूझबूझ वाली बैटिंग। नहीं, दूसरे रन के लिए नहीं भागेंगे। धीरज अपने टीम के कप्तान जो आज नहीं खेल रहे हैं उनकी कमी को महसूस नहीं होने दे रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि उनके टीम के कप्तान इस टीम में वापस कैसे प्रवेश करेंगे, क्योंकि धीरज बहुत ही अच्छे लय में बैटिंग कर रहे हैं। खैर, वो कप्तान है, टीम में उनकी जगह पक्की है। कंपनी के मेन आदमी हैं। और ये प्रयास, बॉल को बाहर छक्का मारने की प्रयास लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर एक सिंगल लिंक ही मिलेगा और स्कोर जाके खड़ा होता है 59 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी शॉट, और ये एक सिंगल ही मिलेगा। इसी के साथ 70 रन पूरे।
माफ़ कीजिएगा 60 रन पूरे। अब यूनाइटेड स्पोर्टिंग को आधे रन और बनाने हैं, आधे से थोड़े ज़्यादा रन और बनाने हैं। और बहुत सूझबूझ वाले बल्लेबाजी, बहुत सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कौशिक प्रामाणिक द्वारा। सुप्रतीक नाथ फिर से सिर्फ 5 गेंद ही डालेंगे और ये एक बहुत अच्छा निर्णय सिद्धार्था दास को लाने का मौका है उनके पास में। एक दाएं हाथी बल्लेबाजी को गेंद डालने की कोशिश तो रहेगी कि विकेट बटोरे जाए, क्योंकि पिछले 30 गेंदों में रन की गति को रोक नहीं पाए हैं और ये खेल फिनिक्स के हाथों से फिसलता जा रहा है। मगर सिद्धार्थ के हाथों में गेंद है। अगली गेंद, अच्छी गेंद, गोइंग डाउन लेग। उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास कम। कोई किसी भी सूरत में अंपायर उसे आउट नहीं देंगे। अगली गेंद, और बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट कौशिक प्रामाणिक के बैट के द्वारा। और ये एक और चौका का इजाफा। बहुत ही अच्छी बैटिंग हो रही है यहाँ पे यूनाइटेड स्पोर्टिंग की। 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 9 विकेट अभी भी हाथ में। अगर हम बैट्समैन जो अभी बल्लेबाज जो बचे हैं उनके तरफ नज़र उठाकर देखें इस गेंद के बाद। अगली गेंद, और ये एक और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। ये गेंद किसी के लिए नहीं रुकेगी सिवाय इस फील्डर के जो उस बॉल को रोक करके 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। यूनाइटेड स्पोर्टिंग का स्कोर अब जाके खड़ा होता है 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन अभी भी बाकी जॉय मुखर्जी, वासुदेव राव, क्रांति वर्मा, दिलीप सिंह, सुमंतो भट्टाचार्य। और ये एक कवर के तरफ एक और सिंगल, केशव बॉल को रोकते हुए। स्कोर जाके खड़ा होता है 67 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे दोनों बैट्समैन द्वारा, मैच को फिनिक्स से दूर ले जाते हुए। देखने को मिल रहा है कि गौतम दास पैड अप नहीं है, लग रहा है कि उनके हाथों में चोट है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये बॉल रुके ना किसी के लिए भी। चौका, 71 रन बोर्ड पे, 50 गेंदों के समाप्ति पे स्कोर जाके खड़ा होता है 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ हाफ वे मार्क पर यूनाइटेड स्पोर्टिंग अपनी गेम के ऊपर एक मजबूत पकड़ बनाते हुए गेम को फिनिक्स से दूर ले जा रहे हैं। धीरज पटोदिया बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हम एक लेंगे कमर्शियल ब्रेक। आपके साथ फिर जुड़ेंगे जू एंड से अगले 10 गेंदों के लिए। कमर्शियल ब्रेक मानते हैं। फिर से स्वागत है आप सबका YouTube चैनल पे एक्वलेड मैनेजमेंट सर्विसेज द्वारा आयोजित APL द 100 फॉर्मेट का
टूर्नामेंट के निर्माता फिदाउल हक और उनकी सक्षम टीम जो इस टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं। स्कोरबोर्ड की तरफ नज़र देने के बाद मालूम पड़ रहा है कि 50 गेंदों में 71 रन का इजाफा हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए सिर्फ 53 रनों की आवश्यकता, रनर बॉल से भी कम। बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता थी, बट बल्लेबाजों का क्या कहना। और ये एक बाउंसर बॉल करने की प्रयास और 1 फॉर दी ओवर का इजाफा। 1 फॉर दी लेग अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया था अंपायर ने, लेग अंपायर ने किया था। अंपायर्स का प्रदर्शन अगर कहा जाए तो कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा है इस मैच में। लेग अंपायर ने 1 फॉर दी ओवर का इशारा किया था, बट मेन अंपायर कह रहे हैं कि नहीं, हमने वो इशारा नहीं देखा और हम वो इशारा नहीं मानेंगे। अब ये वाली इस परिस्थिति में आप बैट्समैन, आप बल्लेबाज के लिए आप बल्लेबाज की उनकी जो सोच है, आप उनकी सहमत भी हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने 1 फॉर दी ओवर दिखाया भी था, चाहे वो आप कुछ भी बोलें। सोहन जो पानी लेके अंदर गए थे, ग्राउंड में अंपायर से भी वार्तालाप करते हुए फिर से मैदान के बाहर सोहन रॉय जो इस टीम के पोस्टर बॉय कहलाते हैं यूनाइटेड स्पोर्टिंग के। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे इन परिस्थितियों में कंसंट्रेशन भंग होने के बाद में बैट्समैन अपनी विकेट गंवा बैठते हैं, बट कौशिक ने बहुत सहजबूझ से एक सिंगल और फिर एक ओवरथ्रो में एक और रन बटोरा यूनाइटेड स्पोर्टिंग के लिए। और बहुत ही बढ़िया शॉट सीधा फील्डर के हाथों में। यूनाइटेड स्पोर्टिंग जीत की तरफ अग्रसर। फिनिक्स अभी भी अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी हिम्मत के साथ इस मैच में वापसी करने की कोशिश कर रही है। दाद देनी होगी उनकी स्पिरिट को, दाद देनी होगी उनके एफर्ट को। परिणाम चाहे कुछ भी हो, और ये विकेट का एक चांस, और धीरज आउट होते हुए। बहुत ही बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट। धीरज
पचपन गेंदों की समाप्ति पे स्कोर जाके खड़ा हुआ 74, 2 विकेट के नुकसान पर। कौशिक प्रमाणिक अभी भी क्रीज पे 21 गेंदों में 18 रन, और उनके साथ अब जुड़ चुके हैं पिच पे जॉय मुखर्जी, छोटे कद के बैट्समैन, बट बहुत बड़े दिल के प्लेयर है। यूनाइटेड स्पोर्टिंग में काफ़ी सालों से है जॉय मुखर्जी। बीच में एक साल वो एमजी स्पोर्टिंग से खेले थे, जब यूनाइटेड स्पोर्टिंग को बैन किया गया था एक सीज़न के लिए। बट जैसे ही यूनाइटेड स्पोर्टिंग की वापसी हुई, जॉय मुखर्जी की वापसी हो ही गई थी। नए गेंदबाज का क्रीज में आगमन, और ये है वाल्मीकि जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लेफ्ट आउट स्पिनर। बॉलिंग टू जॉय मुखर्जी, और जॉय मुखर्जी बिना किसी विलंब के अपने आप एक और सिंगल लेते हुए रनों का दबाव उतना ज़्यादा नहीं है यूनाइटेड स्पोर्टिंग के ऊपर, विकेट भी काफ़ी हाथ में है। और ये एक यहाँ 4 मिलेगा, कमेंट्री बॉक्स की तरफ बॉल आते हुए एक और चौका, केशव बॉल लेते हुए अपने अच्छे आर्म का प्रदर्शन करते हुए 7 नंबर की जर्सी पहनते हुए बॉल वापस वाल्मीकि के हाथ में देते हुए फिर से फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फील्डिंग करते हुए बहुत ही अच्छी रनिंग का प्रदर्शन। पैडेड अप हैं वासुदेव राव और देवता समान क्रांति वर्मा, और ये बॉल था मारने के लिए मगर ये चूके (81) 81 रनों का स्कोर हासिल कर चुकी है यूनाइटेड स्पोर्टिंग। डिफेंस करते हुए बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन। 40 गेंदों में अब सिर्फ आवश्यकता है 43 रनों की। यूनाइटेड स्पोर्टिंग के हाथ में है 8 विकेट, और क्रांति वर्मा के आशीर्वाद से और उनके सहमति से एक बार हो जाए जॉय यूनाइटेड। और जॉय ही बल्लेबाजी कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए। Come on, Joy. स्कूल एंड से बॉलिंग का गेंदबाजी की जिम्मेवारी दी गई है देबायन सरकार को। टोनी बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिपेंडेबल प्लेयर है, बहुत डिपेंडेबल खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे इंसान। अब भाई खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अच्छा इंसान होना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देबायन उन्हीं लोगों में से एक है
और ये कैच का प्रयास, और ये बॉल भी 2 रनों के लिए। बहुत अच्छी रनिंग जॉय द्वारा। एक बार के लिए लगा था कि बॉल फील्डर के हाथों में जा बसेगी और एक और विकेट मिलेगा, मगर फील्डर वहाँ पे कैच लें कि रन रोके, उसी विडंबना में फंसते हुए, और 2 रन। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बट उससे भी अच्छी बल्लेबाजी। एक सिंगल लेते हुए 4 गेंदों में 3 रन। अगली गेंद कौशिक प्रमाणिक सामना करेंगे देबायन सरकार की गेंदबाजी का। और बहुत ही अच्छी शॉट। इसे हम कहते हैं T20 का बैटिंग, और बहुत ही अच्छा रिवर्स स्वीप थर्ड मैन के ऊपर हवा में उछाल के मारा है। एक और चौका कौशिक प्रमाणिक द्वारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कौशिक प्रमाणिक द्वारा। देबायन सरकार अगली 5 बॉल भी डालेंगे इसी एंड से, स्कूल एंड से। बहुत ही अच्छा शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन द्वारा। छोर बदलते हुए अब जॉय आए हैं क्रीज पे बैट करने के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छा सिंगल लिया। इसी के साथ 90 रन पूरे, और अब जीत के लिए यूनाइटेड स्पोर्टिंग को सिर्फ 34 रनों की आवश्यकता 33 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जॉय कौशिक भी उसे बहुत जल्दी रीड कर लिए। बहुत अच्छी शॉट, 1 रन मिलेंगे, और ये 2 रन ले लिए इन्होंने वापस फिर से। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स कौशिक और जॉय द्वारा। बहुत ही अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन। कहना पड़ेगा कि फिनिक्स शायद और थोड़े रन के प्रयास में थी, और अगर शायद 30 रन और ज़्यादा अगर बना लेते तो शायद गेम में एक अच्छी फाइट होती। और इसी के साथ 10 बॉलों का समाप्ति स्कूल एंड से, और स्कोर जाके ठहरा 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अब जीत से सिर्फ 31 रन दूर 30 गेंदों में। अचानक से लग रहा है कि लाइट भी थोड़ी कम हो गई है यहाँ सेंट थॉमस ग्राउंड में। एक्युलेट मैनेजमेंट सर्विसेज को स्पॉन्सर्ड बाय दानिश म्यूजिक, इलाही जो कि एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है मुगलाई खाना के लिए, CBC कैलकाटा बोटिंग क्लब जिसके निर्माता हैं हमारे प्रिय फैज़ अहमद खान, जो कि एक्युलेट को शुरू के दिनों से अपना सहयोग देते आ रहे हैं। खुद भी बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, बहुत प्यार करते हैं इस गेम से। मुख्य निर्माता फिदाउल हक, जो जिनके लिए जितनी अच्छी बातें कहा जाए उतनी कम है, जिनके घर में शायद बर्तन कम ट्रॉफी ज़्यादा हैं। व्यक्तिगत
ट्रॉफ़ी बोल लीजिए या टीम ट्रॉफ़ीज़ बोल लीजिए, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आज भी खेले जा रहे हैं। फराज जो उनके भतीजे हैं, उनके साथ में इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। बहुत छोटे उम्र से हम फराज को देखते आ रहे हैं सेंट थॉमस में और बीएनआर में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए। ऐसा कहा जा सकता है कि फराज भी इस टूर्नामेंट की तरह इस टूर्नामेंट के साथ ही बड़े हुए हैं। और यूनाइटेड स्पोर्टिंग यूनाइटेड सर्विसेज उन टीमों में से हैं जो शुरुआत से एक्कोलेट के साथ जुड़े हुए हैं एज अ पार्टिसिपेटिंग टीम। और ये 6 रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छी शॉट कौशिक प्रामाणिक द्वारा। बहुत जल्द जीत की तरफ अग्रसर होती हुई यूनाइटेड स्पोर्टिंग। बट भाई और बहनों, ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। कोई भी कहीं से भी जीत सकता है, कोई भी कहीं से भी हार सकता है। और एक और छक्का, बहुत ही अच्छी शॉट कौशिक प्रामाणिक द्वारा। 101 रन 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब 26 गेंदों में सिर्फ 17 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंद और एक और 6। बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे। एक और छक्का। अब सिर्फ और सिर्फ 11 रन की आवश्यकता। कौशिक प्रामाणिक अपने 50 की तरफ 51 रन 34 गेंदों में 50 रन कौशिक प्रामाणिक के। कौशिक कैमरा की तरफ अपने बैट को उठाते हुए अर्धशतक पूरा करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अब आए हैं नए गेंदबाज रक्षित। और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि रक्षित को बॉलिंग में गेंदबाजी में बहुत लेट लाया गया है। इन्हें रक्षित को पहले ट्राई लेना चाहिए था। अच्छे गेंदबाज हैं रक्षित, अच्छी जगह बॉल डालते हैं, फियर्स कंपटीटर भी हैं, शुरू के दिनों से फीनिक्स के लिए खेल रहे हैं। पहला बॉल डॉट बॉल रहा उनका। और एक और 6, ये चौथा छक्का है। और कौशिक प्रामाणिक ने अब तय कर लिया है कि अब हम ना रुकेंगे, अब हम ना रुकेंगे। वायु मेरे साथ, बल्ला मेरे साथ, और इस मैच के 2 पॉइंट भी मेरे साथ, फिर घर जाएंगे। और ये 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ स्कोर समान। अब सिर्फ 1 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए यूनाइटेड स्पोर्टिंग के लिए। और इसी के साथ एक डॉट बॉल। और ये चौका चम्मच शॉट के द्वारा यूनाइटेड स्पोर्टिंग फिर से एक और जीत के साथ। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यूनाइटेड स्पोर्टिंग द्वारा इस मैच को जीतते हुए, पॉइंट्स टेबल पे अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए फिर से एक और जीत। सोहन रॉय जो 10 गेंदों में 7 रन बना के
आउट हो गए थे। कौशिक प्रमाणिक 39 गेंदों 40 गेंदों में 65 रन, माफ़ कीजिएगा 39 गेंदों में 61 रन। धीरज पटोदिया 24 बॉलों में 44 रन और जॉय मुखर्जी 7 गेंदों में 6 रन होकर नाबाद फिर से पवेलियन की तरफ आते हुए मैच यूनाइटेड स्पोर्टिंग जीत चुकी है और आज के मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा कौशिक प्रमाणिक को, जो कि 2 कैच भी लिए और 65 रन भी बनाए। बहुत ही अच्छी गेम का प्रदर्शन। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए मैच के साथ में, एक नए मोड़ के साथ में, नए टीमों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।